अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर नुसरत कुरैशी। अब हमने लास्ट टाइम हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ था फीडबैक सिस्टम। That feedback system acts synergistically with the effect of increased extracellular potassium concentration to increase potassium excretion whenever potassium intake increases. So आज हम शुरू करेंगे blockade of aldosterone feedback system greatly impairs control of potassium concentration. अब हमारे पास दो कंडीशंस हैं। एक हमारी एडिसन्स डिजीज है। एडिसन डिजीज में एल्डोस्टेरॉन इज एब्सेंट और वेरी मच डिक्रीज्ड। तो जब ये एब्सेंट होगा ये बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाएगा। रीनल पोटेशियम की जो रीनल एक्सक्रीशन है वो इम्पेयर हो जाती है। उसमें नुक्स आ जाता है। और होता क्या है, ग्रेटली इंक्रीज्ड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड पोटेशियम जो होता है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। पोटेशियम जो है वो एक्सक्रीट नहीं हो रहा, सो उसकी एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और इसको हम हाइपरकैलेमिया कहते हैं। दूसरा जो हमारे पास है वो है प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म। इसमें ग्रेटली जो है एल्डोस्टेरॉन वो बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू स्टिमुलेशन, और उसकी वजह से पोटेशियम जो है वो ज़्यादा सिक्रीट होती है आउट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल एंड दैट रिजल्ट इन की वजह से इंक्रीज लॉस होता है किडनीज में से पोटेशियम का। जब पोटेशियम ज़रूरत से ज़्यादा लूज हो जाती है तो दैट प्रोसेस दैट कंडीशन is called hypokalemia. अब aldosterone जो है also increases cellular uptake of potassium, which contributes to powerful aldosterone potassium feedback mechanism. अब ये कैसे इफेक्ट करता है, we can see in this diagram. पोटेशियम जो एल्डोस्टेरॉन सिस्टम अगर ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा। नॉर्मली क्या होता है कि अगर ये जो हम रेड लाइन देख रहे हैं, दिस इज नॉर्मल पोटेशियम एक्सक्रीशन और पोटेशियम लेवल्स इन द प्लाज्मा पोटेशियम लेवल्स। Now, in normal case, when we give extra amount of potassium, से 7 गुना ज़्यादा पोटेशियम हम देते हैं। एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म जो है, फीडबैक मैकेनिज्म वर्किंग है, जो कि एड्रिनल ग्लैंड्स के साथ होता है जो एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट करते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली उसको रीएडजस्ट करता है। जितना ज़्यादा पोटेशियम आता है इनटेक होता है उतनी ज़्यादा एक्सक्रीट हो जाता है। ये ऑटोमेटिकली जो एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट होता है एड्रिनल से वो करता है। अब ये जो ब्लू लाइन है हम यहाँ पे देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट हमने किया है इन अ डॉग को उसके हमने एड्रिनल ग्लैंड्स रिमूव कर दिए हैं और उसको 7 गुना ज़्यादा पोटेशियम दिया है। अब उसमें जो और उसको कंट्रोल, पोटेशियम लेवल कंट्रोल हम करते हैं एल्डोस्टेरॉन ड्रिप के साथ। सर्टेन नंबर ऑफ ड्रॉप्स हम देंगे उसको ताकि वो एक लेवल पे रहे। उसका जब हम पोटेशियम हम उसको ज़्यादा देते हैं, 7 गुना ज़्यादा देते हैं, तो अब ये जो ऑलरेडी एल्डोस्टेरॉन ड्रिप है सिस्टम है ये काम नहीं कर रहा क्योंकि ये एक फिक्स्ड अमाउंट में जा रहा है। तो जो ज़्यादा है वो अंदर ज़्यादा रह जाएगी। जैसे कि ऑटोमेटिक उसमें होता है कि
ये जो हम रेड लाइन देख रहे हैं, ऑटोमेटिकली नॉर्मली पोटेशियम जो है, पोटेशियम लेवल्स हमारे पास 4.2 मिली मोल्स मोल्स इक्विवेलेंट पर लीटर है। लेकिन पोटेशियम के देने के बाद भी 7 टाइम ज़्यादा देने के बाद भी, चूँकि ऑटोमेटिकली एल्डोस्टेरॉन फीडबैक मैकेनिज़्म वर्क कर रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादातर जो है वो एक्सक्रीट हो जाता है, और अगर रह जाता है तो बहुत स्लाइट राइज होती है फ्रॉम 4.2 टू जस्ट 4.3। आप अगर देखें तो ये, और इसमें बिल्कुल स्लाइट डिफरेंस है। जबकि जिन डॉग्स का रिमूव कर दिया गया है एड्रिनल ग्लैंड, उसमें ऑटोमेटिक रेगुलेशन नहीं रहती, इसमें सिर्फ वो जो हम एल्डोस्टेरॉन दे रहे हैं वही रेगुलेशन है। तो उसमें जो है पोटेशियम levels in the extracellular fluid is going to increase too much। जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं कि जब हमने उसको दिया पोटेशियम लेवल was 3.8 और रेगुलेशन नहीं हो रही, ऑटो रेगुलेशन नहीं हो रही, तो ये पोटेशियम लेवल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इंक्रीज करके इट रीचेस अप टू ऑलमोस्ट 4 अगर हम इस तरह से इसको लेके जाएं तो देख इट ऑलमोस्ट 4.7। सो दैट मीन्स दैट aldosterone feedback system is important for potassium regulation। और ये तो हमने एक्सपेरिमेंट किया डॉग्स में, बट सेम थिंग हैपेंस with in the human beings। We have already talked about primary aldosterone when in condition primary aldosterone excessive potassium is being excreted। So the condition whatever is the condition that with us is hypokalemia, क्योंकि अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम लेवल जो है वो नॉर्मल से कम हो गई है। ऑन द अदर हैंड एडिसन्स डिजीज जो है उसमें पोटेशियम इज नॉट बीइंग एक्सक्रीटेड फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स, सो पोटेशियम लेवल उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा हो जाती हैं, और सो दिस कंडीशन इज नोन एज हाइपरकैलेमिया। अब पोटेशियम कैसे डिस्टल ट्यूब्यूल में अगर फ्लो रेट ज़्यादा है तो वो स्टिमुलेट करेगा पोटेशियम एक्सक्रीशन को। सो what we do see is that increased distal tubular flow rate stimulate potassium secretion, rise in distal tubules of distal tubule fluid and collecting tubule flow rate can be due to जब हम high sodium intake होती है उसकी वजह से होता है। high sodium is being going into the tubules, और extra water is going to come and सब होता है। So the other condition is this of increased tubular decrease in tubule flow, distal tubule flow rate is caused by increased sodium intake, which results in decreased potassium secretion, and high sodium intake is going to result in tubular flow rate, and this stimulates potassium secretion as compared when the potassium intake is low। जब potassium intake low होगी तो secretion जो है flow rate कम होगा। जब potassium is high, we are taking potassium in high doses, higher doses, तो flow rate जो है
इंक्रीज करेगा, जब फ्लो रेट इंक्रीज करेगा तो नेचुरली पोटेशियम सिक्रीशन जो है it is also going to increase. Now there are two effects of high volume flow rate that increases potassium secretion. पहला तो है कि when potassium is secreted into tubular fluid, ल्यूमिनल पोटेशियम कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज कर जाती है और उसकी वजह से जो ड्राइविंग फोर्स है पोटेशियम की डिफ्यूजन का इन द ड्राइविंग फोर्स जो है पोटेशियम डिफ्यूजन का इन द ल्यूमिनल मेम्ब्रेन it decreases. So increased tubular flow rate, then continuously वो फ्लो रेट आ रहा है वो और ड्राइविंग फोर्स डिक्रीज हो गई है तो देयर इज कॉन्टिन्यूस सिक्रेशन ऑफ पोटेशियम आउट ऑफ द ट्यूबल्स. फ्लो आ रहा जा रहा है और पोटेशियम एक्सक्रीट होती जा रही है. Therefore, increase in tubular concentration, potassium concentration becomes minimum and the net potassium excretion increases. अब एक तरफ से आ रहा है दूसरी तरफ से निकल रहा है, coming in and being excreted, so the net potassium excretion जो है increase कर जाती है क्योंकि ये रुक नहीं रहा है, it's continuous mechanism going on. Secondly, with high tubular flow rate, जब tubular flow rate ज़्यादा होगा, it increases the high conductance big potassium channels in the luminal membrane. जो big potassium channels luminal membrane में है वो उनकी कंडक्टेंस, उनका नंबर ज़्यादा हो जाएगा, उनकी कंडक्टेंस ज़्यादा हो जाएगी और जब उनकी कंडक्टेंस जो स्क्रीट आउट कर रहे हैं वो ज़्यादा हो जाएगी तो पोटेशियम जो है वो ज़्यादा एक्सक्रीट हो जाएगा अक्रॉस द मेम्ब्रेन. सो नॉर्मली ये जो बिग पोटेशियम चैनल्स हैं they are quiescent, that they are quiet, they are not active. So normally ये काम नहीं कर रहे हैं, ये तब काम एक्टिव होते हैं जब ट्यूबुलर फ्लो रेट ज़्यादा होता है. Now increased tubular flow rate is important और in tubular flow rate ज़्यादा increased tubular flow rate क्यों important है? It is important in preserving normal potassium excretion when sodium intake changes. ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जब पोटेशियम अगर सोडियम इनटेक की चेंजेस होती हैं, ज़्यादा सोडियम ले लेते हैं या कम सोडियम, तो अकॉर्डिंगली ये जो ट्यूबुलर फ्लो रेट है ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है. अकॉर्डिंगली पोटेशियम या तो ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी. अब हम देखते हैं कि इन हाई सोडियम इनटेक, जब सोडियम इनटेक ज़्यादा होता है, it results in decreased aldosterone secretion, which in turn decreases the rate of potassium secretion, and that in turn results in decreased urinary excretion. लेकिन high distal tubular flow rate that occurs with increased sodium intake increases the potassium excretion. So दो इफेक्ट हैं इंक्रीज सोडियम इनटेक के. एक तो ये है कि ये एल्डोस्टेरोन डिक्रीज करती है, दूसरा जो है ये डिस्टल ट्यूबुलर फ्लो रेट को इंक्रीज करती है और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं. सो जब ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, देयर इज लिटिल और नो चेंज इन पोटेशियम एक्सक्रीशन एंड ऑपोजिट इज ट्रू ऑफ द डिक्रीज इनटेक. यहाँ पे हम ये डायग्राम देख सकते हैं, फिगर देख सकते हैं. इसमें हम देखते हैं कि ये यहाँ पे हमने सोडियम ज़्यादा ली है. अब सोडियम के तीन इंक्रीज सोडियम अपटेक के या इनटेक के तीन इफेक्ट होंगे. एक तो इफेक्ट होगा एल्डोस्टेरोन पे, एल्डोस्टेरोन की सिक्रेशन डिक्रीज कर जाएगी. दूसरा इफेक्ट जो होगा वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पे होगा.
सोडियम ज़्यादा है तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कि इट्स ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो जाएगी. थर्डली, प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सोडियम रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा. सो तीन इफेक्ट्स हैं. एक सोडियम हाई सोडियम इंटेक के, एक इज डिक्रीज सोडियम एल्डोस्टेरॉन, increased glomerular filtration rate, and decreased proximal tubular sodium reabsorption. Now, increased glomerular filtration rate plus proximal decreased tubular sodium reabsorption दोनों मिलके तो डिस्टल ट्यूब्यूल जो है उनका फ्लो रेट ज़्यादा कर देंगे. सो जब फ्लो रेट ज़्यादा होगा डिस्टल ट्यूब्यूल्स में, इट इज़ गोइंग टू रिजल्ट इन increased potassium secretion from the cortical collecting ducts, and this on the other hand aldosterone जो है वो प्रिजर्व करेगा पोटेशियम को, और पोटेशियम सिक्रीशन कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में कम होगी. इधर ज़्यादा हो रही है, इधर कम हो रही है, सो एक दूसरे को ये बैलेंस कर रहा है. तो अल्टीमेट रिजल्ट इज अनचेंज्ड पोटेशियम एक्सक्रीशन इन दिस केस. ये तो हमारा हो गया पोटेशियम की एक्सक्रीशन के. अब हम देखेंगे जब हम सोडियम हाई सोडियम इंटेक लेते हैं तो उसका पोटेशियम एक्सक्रीशन पे क्या इफेक्ट होता है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डील विद एक्यूट एसिडोसिस डिक्रीजेस. एसिडोसिस जो है, एज यू नो, एसिडोसिस इज increased hydrogen concentration in extracellular fluid, और एसिडोसिस जो है डिक्रीजेस पोटेशियम सिक्रीशन. जब एसिडोसिस होगा पोटेशियम सिक्रीशन जो है वो कम हो जाएगी फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स, और जब एल्कलोसिस जो कि लेस हाइड्रोजन कंसंट्रेशन है, इट इज गोइंग टू इंक्रीज potassium excretion from the renal tubules. Now, acidosis के effects जो हैं, one is acidosis reduces sodium, potassium ATPase pump की activity जो है वो reduce कर देती है. This in turn reduces intracellular potassium concentration and subsequently passive diffusion of potassium. इंट्रासेलुलर पोटेशियम के कंसंट्रेशन कम हो जाता है और पैसिव डिफ्यूजन अक्रॉस जो ल्यूमल मेम्ब्रेन, पैसिव डिफ्यूजन होता है इनटू द ट्यूब्यूल्स, ल्यूमल साइड ऑफ द सेल्स के इनटू द ट्यूब्यूल्स. सेकेंडली, एसिडोसिस जो है also reduces the number of potassium channels in the luminal membrane. दूसरा इफेक्ट एक तो यह है कि एसिडोसिस जो है वो इंट्रासेलुलर पोटेशियम कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, क्योंकि एटीपीएस एक्टिविटी जो है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस एक्टिविटी जो है, इज नॉट एक्टिव, और it reduces the acidosis reduces that results in decrease in intracellular potassium concentration, और उसकी वजह से subsequent passive diffusion जो होती है across the luminal membrane of the cell into the tubules होती है. Second function of acidosis, effect of acidosis is also to reduce the number of potassium channels जो कि इन luminal membrane में होते हैं, और जब वो luminal membrane में potassium channels कम होंगे, naturally potassium is going to be excreted less. In case of, अब क्या होता है, ये तो normal है in acute cases जब एसिडोसिस होगा. In normal और in prolonged acidosis, जो acidosis over several days होता है, it increases urinary activity, urinary excretion of the potassium. अब इसमें मैकेनिज्म क्या होता है, ये कैसे एक्सक्रीशन इंक्रीज करेगा? इन पार्ट
कुछ इसका पार्ट वजह ये है कि इफेक्ट ऑफ क्रॉनिक एसिडोसिस इज दैट इट इज गोइंग टू इनहिबिट प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में सोडियम क्लोराइड और वाटर की रीअब्सॉर्प्शन ये इनहिबिट करता है, जो कि इन टर्न इंक्रीज करती है डिस्टल वॉल्यूम डिलीवरी, क्योंकि अब ये जो है इसके तीनों चीज़ें जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से मूव करते हैं इनटू द डिस्टल ट्यूब्यूल, और इस अमाउंट इज इंक्रीज्ड. So along with it, with increased excretion of water, there is increased secretion or excretion of potassium from the distal tubules. Now, this is opposite to what happens in acute uh, acidosis. Third, next is that this effect overrides the inhibitory effect जो सोडियम हाइड्रोजन आयन का है. एक तो ये है कि जो है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में सोडियम क्लोराइड और वाटर की एब्जॉर्प्शन नहीं होती है, पोटेशियम भी उधर होता है, इसलिए दैट ऑल स्टिमुलेट द पोटेशियम एक्सक्रीशन. सेकेंडली, जो क्रॉनिक एसिडोसिस का इफेक्ट होता है कि ये इनहिबिट द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयंस ऑन सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पम्प. Therefore, chronic acidosis leads to potassium loss, whereas acute acidosis जो है वो potassium excretion decrease करता है. अब benefits क्या होते हैं of high potassium diet के and low sodium diet के? Normally, I'll just tell you what is the recommended diet amount for sodium and potassium. Taking diet with sodium intake as low as 10 to 20 millimoles per day, and high potassium intake as high as 200 millimoles per day can be taken, or high diet potassium we get from vegetables and fruits. और इनमें फ़ायदा ये होता है कि डू नॉट एक्सपीरियंस एज रिलेटेड जो डिजीज़ है, जैसे 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 एज बढ़ती है जो उनसे रिलेटेड डिजीज़ हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, वो इनमें देर से होती हैं या बहुत कम होती हैं. ये चीज़ देखी गई थी इन यानोमामो ट्राइब में, जो कि अमेज़न की एक ट्राइब है. वो लोग जो हैं वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनकी जो उनमें ये जो डिसीज़ हैं, ओल्ड एज डिसीज़ कम हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है और कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ है. अब इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जहाँ पे प्रोसेस्ड फूड हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो कि सोडियम में जिसमें सोडियम ज़्यादा होती है, जैसे कि हम लोग चिप्स इस्तेमाल करते हैं और इसी किस्म की और चीज़ें जो डाइट्स में हम इस्तेमाल करते हैं, प्रोसेस्ड फूड, टिन्ड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह, तो उसमें सोडियम की जो अमाउंट है टू प्रिजर्व दोज थिंग्स, सोडियम की अमाउंट ज़्यादा होती है और दे आर लो इन पोटेशियम. अब जो ये इंक्रीज सोडियम इंटेक है और लो पोटेशियम इंटेक है, इसकी वजह से जो है ये बहुत सारी एज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होंगी. In industrial countries, potassium intake जो average है, that is 30 to 70 millimoles per day, while sodium जो है उससे कहीं ज़्यादा है, and it is 140 to 180 millimoles per day. Are you understanding? If you have any problem, please मुझे बताइए. Okay. If it's all right with you, I will continue with my lecture.
Now diet जो high होती है in sodium or low in potassium, that is going to result in hypertension, that is high blood pressure, and heart diseases and kidney diseases or disorders. That's a diet which is rich in potassium. On the other hand, it reduces blood pressure, it reduces the risk of stroke, that is हेमिप्लीजिया हो गया, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट वगैरह हो गए. चूँकि पोटेशियम में हाई या सोडियम में ये लोग हैं, तो ये सब चीज़ें जो है इनमें इन लोगों में नहीं होंगी जो हाई पोटेशियम डाइट लेते हैं. और जो है वो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज नहीं होगी, जब कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस बहुत कम होंगी, रिड्यूस्ड होंगी, किडनी डिजीजेस कम होंगी. तो सो दैट कम्स टू दैट हमें जो है अपनी डाइट में पोटेशियम ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और सोडियम लो अमाउंट में होनी चाहिए है टू प्रिवेंट ऑल दिस कंडीशंस. रिकमेंडेड डाइटरी गाइडलाइन जो है वो सोडियम क्लोराइड डेली पर डे सोडियम क्लोराइड जो है इज 65 मिलीमोल्स पर डे. उसमें सोडियम जो है इज particularly we are talking about sodium is 1.5 grams per day और total sodium chloride जो होगा वो 65 millimole comes to sodium chloride of 3.8 grams per day. Now increasing potassium to 1 millimoles per day, that is 4.7 grams per day, decreases the risk of, as I've already told, decreases the risk of blood pressure, risk of stroke, coronary artery disease, kidney diseases. Continuing with our lecture, we are going to start with control of renal calcium excretion. अब तक तो हम कर रहे थे पोटेशियम रेगुलेशन. अब हम करेंगे कंट्रोल ऑफ रीनल कैल्शियम एक्सक्रीशन और रीनियल और एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन लेवल. कैल्शियम रेगुलेटिंग हार्मोन्स क्या हैं? एक तो पैराथायराइड हार्मोन है जो कि पैराथायराइड ग्लैंड्स में से ग्लैंड्स secrete करते हैं. They are 4 in number, parathyroid glands, and they are located in front of the neck. And the other is calcitonin. Calcitonin भी parathyroid gland secrete करते हैं. Normal plasma level of calcium is 2.4 milliequivalent per liter. What is hypocalcemia? There are two terms. एक hypocalcemia है, दूसरा hypercalcemia है. अब आप ये याद रखें कि जहाँ पे भी हाइपो का वर्ड आएगा उसका मतलब है कम, और जहाँ पे भी हाइपर आएगा वहाँ पे उसका मतलब है ज़्यादा. सो हाइपोकैल्सीमिया मीन्स लेस calcium in the extracellular fluid or plasma levels. Increased that hypocalcemia के effects क्या होंगे? It increases the excitability of the nerve and muscle cells. नर्व और मसल सेल की एक्साइटेबिलिटी ज़्यादा करते हैं, और जब ये बहुत ज़्यादा हाइपोकैल्सीमिया जो है, कैल्शियम लेवल इज़ वेरी लो, very low, then it is going to result in hypocalcemic tetany. और टेटनी क्या होती है? सिम्टम्स ये स्पेस्टिक स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है. कॉन्ट्रैक्शन स्पेस्टिक होती है, एक जगह रहती है, और इन्फ्लेक्शन होती है जो मसल्स और वो कंडीशन है वो फ्लेक्शन. जैसे अगर हम हाथ को दें तो हाथ के फिंगर्स जो हैं और फिंगर्स एंड थंब इज फ्लेक्स्ड एंड दे आर स्टिफ. Now the other term is hypercalcemia. Hypercalcemia is decreased neuromuscular excitation
और जब ये न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेशन बहुत कम होती है तो इट कैन रिजल्ट इन कार्डियक इरिथमियाज. Cardiac arrhythmias is irregular, fast, irregular heart rate. कैल्शियम की जो है किस फॉर्म में होती है इन एक्स्ट्रा सेलुलर इन प्लाज्मा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज 50% of the total calcium, that is about 5 milliequivalent per liter, is in ionized form, a form which has biological activity at all the cell membranes. उसमें रिमेनिंग 50% तो आयनाइज्ड फॉर्म में है और ये एक्टिव फॉर्म है. रिमेनिंग जो 40% है, अबाउट 40%, इट इज़ बाउंड विद प्लाज्मा प्रोटीन्स. इट इज़ अटैच्ड बाउंड विद प्लाज्मा प्रोटीन्स. और 10% it is complexed with anion or such as phosphate or citrate. Now in acidosis, when the hydrogen ion levels are high, the calcium is less binding with the plasma. Acidosis होगा तो कैल्शियम आयंस जो है उनकी बाइंडिंग कैपेसिटी विद द प्लाज्मा प्रोटीन्स कम हो जाती है. ऑन द अदर हैंड इन एल्कलोसिस कैल्शियम बाइंड्स मोर टू प्लाज्मा प्रोटीन्स. और जब प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ ये ज़्यादा बाइंड हो जाती है तो नेचुरली हमारे पास आयोनाइज्ड फॉर्म कम हो जाती है. और डिपेंडिंग कितनी ये बाइंड हुई है प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ, कितना परसेंटेज, उतना अगर बहुत ज़्यादा हो गई है तो इट इज़ गोइंग टू रिजल्ट इन hypocalcemic technique. Now, calcium intake must be balanced with the net loss in the body over long term. So, calcium जो है कितनी हम लेते हैं, कितनी हम लूज करते हैं, और उसको हमने मेंटेन करना होता है एट अ सर्टेन लेवल जो कि 2.4 है. तो उसको हम तो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. कैल्शियम लार्जली एक्सक्रीट होती है फीसिस में. और यूजुअल rate of dietary intake is about 1000 milligram per day. Per day हम जो कैल्शियम लेते हैं is about 1000 milligram. उसमें से 900 milligram is excreted in feces. और fecal calcium जो है can exceed कैल्शियम इंजेक्शन जो हम कैल्शियम ले रहे हैं और जो कैल्शियम हम फीसेस में एक्सक्रीट कर रहे हैं वो जो फीसेस में एक्सक्रीट कर रहे हैं वो जो हम इनटेक ले रहे हैं उससे ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ये जो है कुछ कैल्शियम इंटेस्टाइनल ह्यूमन में भी लूज होती है. So 99% of calcium is stored out of. अब हम जनरल बात करेंगे कि कैल्शियम की टोटल अमाउंट में से जो है उसमें 99% is stored in bones, being our bones being the large reservoir for the calcium storage. कैल्शियम जितना एक्स्ट्रा कैल्शियम होगा और आउट ऑफ टोटल कैल्शियम 99% जो है वो बोन्स में होती है. तो जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम डिक्रीज होगी तो ये कैल्शियम रिप्लेस होती है फ्रॉम द कैल्शियम ऑफ द बोन्स. जब इधर डिक्रीज होती है फिर कैल्शियम बोन से रीएब्सॉर्ब होती है एंड इट कम्स इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. Now out of other 99% तो हमारी बोन्स में चली गई, और अदर देन दैट only about 0.1% is in the extracellular fluid and जो कि हम बोन से आती जाती रहती है, और 1% इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड में होती है और सेल ऑर्गेनेल्स में होती है. नो कैल्शियम रेगुलेशन के लिए पैराथायराइड हार्मोन इज इम्पॉर्टेंट रेगुलेटर, क्योंकि कैल्शियम अपटेक फॉर द कैल्शियम अपटेक बाय द बोन्स एंड कैल्शियम रिलीज. पैराथायराइड हार्मोन जो है इम्पॉर्टेंट है ताकि कैल्शियम बोन्स के अपटेक के लिए और बोन से रिलीज होने के लिए. डिक्रीज्ड पैराथायराइड हार्मोन PTH in
extracellular fluid, no sorry, extracellular fluid calcium concentration decrease जो होती है जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, इट्स गोइंग टू स्टिमुलेट पैराथायराइड ग्लैंड। जब ये पैराथायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है, इट इंक्रीज रिजल्ट्स इन इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन। दिस पैराथायराइड हार्मोन जो रिलीज होता है फ्रॉम द पैराथायराइड ग्लैंड, ये डायरेक्टली बोन्स के ऊपर एक्ट करती है। जब बोन्स के ऊपर एक्ट करती है तो रीअब्जॉर्प्शन होती है बोन्स में से ऑफ दिस बोन सॉल्ट्स, दैट इज कैल्शियम, एंड greatly release great release of calcium takes place and moves into the extracellular fluid. This then moves जब extracellular fluid में whatever the amount is needed is comes in, so that causes the amount concentration of the extracellular fluid to come back to normal. Increased extracellular fluid calcium levels जो है, on the other hand, they decrease parathyroid hormone secretion, or that is going to result almost no calcium bone reabsorption. अब ECF में कैल्शियम लेवल ज़्यादा है, ये जब ज़्यादा होंगे तो ये स्टिमुलेट नहीं करेगी पैराथायराइड हार्मोन को, जब पैराथायराइड ग्लैंड्स को। जब पैराथायराइड ग्लैंड्स स्टिमुलेट नहीं होंगे तो पैराथायराइड हार्मोन सिक्रीशन नहीं सिक्रीट होगी, और जब पैराथायराइड सिक्रीशन नहीं होगी, पैराथायराइड हार्मोन सिक्रीशन नहीं होगी या पैराथायराइड हार्मोन नहीं होगा, तो बोन्स में से कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, बल्कि calcium deposition होगी bones में. So PTH is largely responsible for day-to-day bone reabsorption and calcium regulation. Now, gastrointestinal tract and kidneys are important site for calcium regulation. कैल्शियम रेगुलेशन कहाँ से होती है, कहाँ से होती है? एक तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से होती है, दूसरा किडनी से होती है। किडनीज में अभी हम बात कर रहे थे, हम करेंगे। और पैराथायराइड हार्मोन रेगुलेट्स प्लाज्मा कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन। ये कैसे रेगुलेट करती है? वन इज बाय स्टिमुलेटिंग बोन रीअब्जॉर्प्शन। जब ECF में बोन कैल्शियम कम होगी तो बोन से रीअब्जॉर्प्शन होगी, इट कम्स इनटू द extracellular fluid. Secondly, it activates vitamin D, which then increases intestinal calcium reabsorption. So regulation के second जो है कि जब पैराथायराइड जो है PTH is regulates, activates vitamin D जो है हमारी बॉडी में, और that increases intestinal calcium reabsorption. जो इंटेस्टाइन में जो हम फूड में हमारी होती है वो रीअब्सॉर्ब हो जाती है. Thirdly, directly increasing renal tubular reabsorption. तो रीनल ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा हो जाती है इन केस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम लेवल्स कम हो. नाउ कंट्रोल ऑफ कैल्शियम एक्सक्रीशन इन किडनीज. कैल्शियम इज किडनीज में कैल्शियम फिल्टर भी होता है, रीअब्सॉर्ब भी होता है, लेकिन ये स्क्रीट नहीं होता है. रीनल, अब हमने पहले बात किया कि कैल्शियम मैक्सिमम जो एक्सक्रीट हो रहा है इज इन द फीसेस. रीनल कैल्शियम एक्सक्रीशन इज कैलकुलेटेड. हम रीनल कैल्शियम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसमें है कि जो टोटल कैल्शियम फिल्टर हो रही है थ्रू ग्लोमेरुलर्स, जो वो हैं कैपिलरीज हैं, और टोटल दैट माइनस कैल्शियम विच इज़ बीइंग रीअब्सॉर्ब्ड. अब रीअब्सॉर्ब कहाँ होती है कैल्शियम? अबाउट 60% कैल्शियम is ionized. Out of that 60%, 40% जो है वो 60% is ionized and 40% is
बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स. 10% हमने बात की थी कि इट्स कॉम्प्लेक्स टू आयंस, anions, that is phosphate and citrate, like phosphate and citrate. Therefore, only 60% जो प्लाज्मा में आयनाइज फॉर्म है, हम उसकी बात करेंगे. प्लाज्मा is that is filtered through glomerulus, and now out of that 60% जो है उसके 60% क्या जो है उसमें से 99% उसको अब हम समझे 60% is 100% is out of that 99% of the filtered calcium. जो कैल्शियम फिल्टर हो रही है from the glomerulus is reabsorbed by the tubules, proximal tubules, and 1% is excreted, is reabsorbed by the tubules on the whole, and 1% is excreted. So out of filtered calcium, that is 60% is reabsorbed. जो 99% में से 60% reabsorb होती है proximal tubules, 25 to 30% reabsorb होती है loop of Henle में, and 4 to 9% जो है in late distal tubules and collecting tubules. So that out 66 का जो 99% है वो reabsorb हो जाती है, and only about 1% is being excreted in the urine by the tubules. Calcium levels are adjusted according to the body need, that is, increased calcium intake will result in increased excretion. Calcium excretion increases. अगर जब ज़्यादा इनके चाहिए तो calcium to the body, it is going to be reabsorbed more, or the other way around. Now, proximal tubule calcium reabsorption. Proximal tubules में calcium reabsorption कैसे होती है? There are two pathways. एक pathway है paracellular pathway, and the other one is transcellular pathway. In here in the diagram you can see both the pathways. Now in this case, in paracellular, this is paracellular pathway. Paracellular pathways में होता है कि calcium is dissolved in water, and then this solution passes between the cells. These are the proximal tubular cells, and this solution of calcium and water passes between the cell through and through into the renal interstitial fluid. So that is one. The other one is transcellular, that is through the cell. This calcium reabsorption takes place. इसमें दो mechanisms हैं. One is electrochemical gradient. Now calcium level is high in the tubular lumen, so it moves because of this chemical gradient inside the cell. The other is that negativity is, in the cell it is more negative as compared to the outside, that is in tubular lumen. So this electric gradient is going to result the calcium to move into the cell. Now अब ये सेल के अंदर तो मूव करके, एक हमने बात की कि एक कैल्शियम जो है उसका इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की वजह से दो उसके हैं, एक इलेक्ट्रिक केमिकल ग्रेडियंट है, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट. केमिकल में कैल्शियम के लेवल्स हैं इन द ट्यूबुलर lumen is high and low in inside the cell, so it moves from outside inside the cell. The second is negativity, is slightly more negative inside than outside, so positive charge moves inside. That is moving into the cells. Up the next, moving out of the cell into the interstitium. This is why calcium moves out from that by calcium, sodium, APT, so calcium,
sodium calcium ATPase activity, and that moves the calcium outside, and the other is counter exchange of the sodium and calcium. So in exchange to calcium, sodium moves inside and calcium moves outside. So this mechanism, this pathway is transcellular, that is ये सेल के अंदर से पास हो रहा है. This was paracellular, it was passing between the two cells, space through the space between the two cells. So that is how this takes place. Out of this, in paracellular pathway, 80% of the reabsorption takes place by the paracellular pathway, and only 20% is by reabsorption occurs through transcellular pathway. That was we were talking about in proximal tubule, in reabsorption of calcium in proximal tubule. Reabsorption of calcium in loop of Henle and distal tubules. Loop of Henle में 50% जो है calcium is being reabsorbed by paracellular pathway in the ascending, thick ascending lip of the loop of Henle. और ये पैरासेलुलर है तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की वजह से होता है. द अदर 50% जो है इज ऑल्सो passing through the thick ascending limb, but it is passing by the transcellular pathway. Distal tubules may calcium reabsorption takes place by active transport. Entirely it's by the active transport through the cell membrane. Mechanism क्या है इसका in proximal and loop of proximal tubule and loop of Henle, and it was both in proximal and loop of Henle. Mechanism is it involves diffusion across the luminal membrane through calcium channels and exit across canal channels से luminal membrane, luminal tubule, luminal membrane के through ये थ्रू कैल्शियम चैनल ये अंदर आता है और वहाँ से ये बेसोलैटरल मेम्ब्रेन के थ्रू बाय कैल्शियम एटीपीएस एक्टिविटी and sodium calcium counter transport mechanism, it goes into the interstitial fluid. In distal tubule and loop of Henle, it is done by parathyroid hormone stimulates the calcium reabsorption. Factors that regulate tubular calcium reabsorption. क्या क्या फैक्टर्स हैं जो ट्यूबुलर कैल्शियम को रीएब्सॉर्ब करते हैं. अब हमको ये चीज़ एक हो गई कि 99% ऑफ द कैल्शियम इज बीइंग रीएब्सॉर्ब्ड in the renal tubules, and only 1% is being excreted in the urine. So अब इसके reabsorption, इसके regulation की factors regulate जो इसको करते हैं वो क्या है. एक most important जो है वो parathyroid hormone है. Parathyroid hormone जो है it increases stimulates calcium reabsorption in the thick ascending limb of loop of Henle or distal tubule में, thereby decreasing the urinary excretion, thick ascending limb of loop of Henle में और डिस्टल ट्यूबल में सारी कैल्शियम reabsorb हो रही है. सो यूरिनरी एक्सक्रीशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है. सेकंड इज डिक्रीज्ड जब
PTH, that is parathyroid hormone level, decreases. This decrease results in increase promotes or increases the calcium excretion by decreasing reabsorption in the loop of Henle and distal tubules. That is when the level goes down. तो जितनी 60% जो हमारी आयनाइज्ड कैल्शियम थी वो फिल्टर हुई थी और उसमें से हमने अब पहले बात की कि इतनी 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 प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में हुई और इतनी कहाँ पे हुई है रीएब्जॉर्ब. तो जब पैराथायराइड हार्मोन लेवल्स कम हो जाएंगे तो कैल्शियम जो है वो लूप ऑफ हैंडे और डिस्टल ट्यूब्यूल पे कम रीएब्जॉर्ब होगी. Secondly, that is going to result in जब कम reabsorb होगी तो that is secondly when there is increase in blood pressure, uh, it is going to result in or there is increases blood pressure, increases extracellular fluid. It is going to result in decreased sodium and water reabsorption. एक तो था कैल्शियम reabsorption कम हो गई है because of decreased parathyroid hormone levels. Sugar की decrease जो है due to increased blood pressure and extracellular fluid increase. There is decrease से ज़्यादा हो गया इसलिए ज़्यादा फिल्टर हो रहा है. जब फिल्टर ज़्यादा हो रहा है तो सोडियम और वाटर भी ज़्यादा फिल्टर हो रहा है और उनकी रीएब्जॉर्प्शन इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कम हो जाती है. उनकी कम हो जाती है तो कैल्शियम की भी रीएब्जॉर्प्शन अलॉन्ग विद दीज टू सोडियम एंड वाटर कम हो जाती है. सो अब जो है चूँकि कैल्शियम लेवल इज मोर देन normal, higher than normal, it is going to result in increased excretion of calcium in urine. Instead of 1%, it is going to amount is going to increase. Thirdly, increased blood pressure and increase in extracellular fluid results in sodium and water reabsorption in proximal tubules, decreases reabsorption in proximal tubule decreases. So the calcium decreases or calcium urinary calcium excretion जो है ये अभी I've already talked up here. Increased plasma. Next is increased plasma phosphate concentration also stimulates parathyroid hormone. This parathyroid hormone increases calcium reabsorption by the renal tubule, or then that is going to decrease in the calcium excretion. Metabolic acidosis में क्या होता है? Metabolic acidosis में it inhibits the calcium reabsorption, so calcium excretion जो है वो ज़्यादा हो जाती है. On the other hand, metabolic alkalosis stimulates calcium absorption and decreases the calcium excretion. This is the table, as you can say, it's in your book, you can do it. Regulation of renal phosphate excretion. Renal phosphate excretion. Phosphate is another ion in the body, or phosphate excretion is controlled by an overflow mechanism. अब overflow mechanism क्या होता है? Mechanism in this is the renal tubule normal transport maximum for reabsorbing phosphate is about 0.1 millimole per minute. अगर that is अगर इस लेवल से phosphate जो है ज़्यादा हो जाए, इस लेवल पे आके मैक्सिमम फॉस्फेट रिएब्सॉर्ब होती है. अगर इससे ज़्यादा फॉस्फेट हो जाती है, लेवल ज़्यादा हो जाती है, दैट इज इट इज़ मोर देन 0.1 मिलीमोल्स पर मिनट, देन it is going to result in excretion of this potassium. With concentration of less than this in glomerular filtrate, all filtered phosphate, as I've already, all the filtered phosphate is absorbed
इससे कम होगी, that is if it is less than 0.1. So all the calcium in the glomerular filtrate that has been filtered is reabsorbed, and if it is more than this, that is if it's more than this uh, transport maximum is more than 0.1 millimole, then excess is being excreted in the urine. Normally, phosphate spills in the urine when its level in the extracellular fluid rises above threshold of 0.8 millimoles per liter. Now, which gives a tubular load of phosphate of about 1 millimoles per minute. ठीक है? A level at which there is continuous, ये level है, that is at 0.1 millimoles per minute के level पे there is continuous excretion of this phosphate uh, with a glomerular filtration rate being 120 milliliters per minute. With milk products and meat intake, phosphate level is usually 1 milliliters per minute per liter, 1 millimole per liter, and this is going to result in continuous phosphate excretion. In proximal tubules, reabsorption of calcium phosphate is about 75 to 80% of the filtered phosphate is reabsorbed by transcellular pathway, sodium, potassium co-transporter and exit. दो चीजें हैं at the proximal tubular proximal tubulate में जो filtrate होता है transcellular pathway में by sodium and potassium co-transporter, and that exits at the basolateral membrane by counter transport of phosphate exchanged for some ions. कोई ion अंदर आता है, we can see, or phosphate is going to go back into the extracellular fluid. Now, very small amount is reabsorbed in Rupa-Fanley and collecting tubules. About 10% of phosphate is excreted in urine. Now, low phosphate diet over time period, over long time, increases the reabsorptive transport level. Uh, uh, Parathyroid hormone has two effects. One is it promotes bone reabsorption, और bone से reabsorb करती है, dumps large amount of phosphate into the extracellular fluid from the bones. Secondly, it decreases the transport maximum by the renal tubules. So जब transport maximum decrease हो जाएगा तो greater proportion of phosphate is going to being lost. We lose greater proportion of phosphate in the urine. Therefore, increased parathyroid hormone secretion results in tubular phosphate reabsorption decrease. जब पैराथायराइड हार्मोन की सिक्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो रीअब्जॉर्प्शन फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन इन ट्यूब्यूल्स कम हो जाएगी. जब वो रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी तो नेचुरली phosphate excretion in the urine ज़्यादा हो जाएगी. Calcium control of renal, magnesium excretion and extracellular fluid ion concentration. Half of the total is stored in the bones. Out of magnesium उससे half जो है वो bones में stored होती है, and सिर्फ 1% जो है ये extracellular fluid में होती है. Total plasma magnesium concentration is about 1.8 milliequivalent per liter. More than half is bound to plasma proteins. So free ionized
concentration of magnesium is only about 0.8 milliequivalent per liter. Average normal daily intake is about 250 to 300 मिलीग्राम पर डे, और इसमें से सिर्फ हाफ जो है वो जीआईटी में एब्जॉर्ब होगा. और to maintain the balance, kidneys must excrete half of this absorbed magnesium, that is out of 250 to 300, 125 to 150 milligram of magnesium जो है ये excrete हो जाना चाहिए by the kidneys. Kidneys normally excrete about 10 to 50% of the glomerular filtrate. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का जो 10 to 15% है वो किडनीज एक्सक्रीट करता है. मैग्नीशियम एक्सेस जो है इट इज गोइंग टू रिजल्ट इन excretion, increased excretion, or magnesium deficiency is going to result in less magnesium excretion. Magnesium is involved in many biochemical processes in the body. मैग्नीशियम बहुत से बायोकेमिकल प्रोसेस जो होते हैं बॉडी के उसमें एक्टिव है. ये जो है वन ऑफ देम इज एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, सो इसको क्लोजली रेगुलेट करना पड़ता है. रेगुलेशन ऑफ मैग्नीशियम एक्सक्रीशन. Proximal tubules absorb only about 25%. Proximal tubule में से मैग्नीशियम सिर्फ 25% फिल्टर्ड होता है. डूप फैलने से इज द प्राइमरी साइट जहाँ से ये फिल्टर होगा, और that is 65%, and less than 5% is filtered from distal tubule and collecting tubules. Mechanism जो है that is to how it is regulated. The mechanism that regulate is not well understood. It is not well understood, but it is thought that following disturbance जो है वो इंक्रीज करती है मैग्नीशियम एक्सक्रीशन को. बस मैग्नीशियम इंक्रीज मैग्नीशियम जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पे जब मैग्नीशियम कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, जब एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम की एक्सपेंशन हो जाएगी वो इंक्रीज हो जाएगा. Thirdly, increased extracellular fluid concentration of calcium की जब होगी. So these three factors are the which results in increased magnesium excretion. Okay, bachcho, that's for today, and we will continue with our next lecture, that is extracellular fluid regulation. Otherwise, okay, Allah Hafiz.